हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पेपर में अगर 80 नंबर के 80 मार्क्स की अगर कॉमर्स आनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आते हैं। तो पेपर से एक दिन पहले आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बूस्टर डोज लेके आया हूँ मैं, ठीक है। ये 5 नहीं है, इसको 10 कर लेना अपने आप, ठीक है। इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले एक और बात बता दूं भाई, ध्यान से एक एक चीज़ यहाँ पे सुन लो, ठीक है। फिर मत कहना कि भाई एक दिन पहले इतना अच्छा मॉक टेस्ट मिला था, हमने मिस कर दिया। इसके सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे 10 बजे, ओके। तो चलिए, अ, इसमें कवर करेंगे मीनिंग्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग, ये ब्रांचेज उसकी, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन, डबल एंट्री, जर्नल, सब्सिडरी, कैश बुक के क्वेश्चन आएंगे, लेजर ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, फाइनल अकाउंट सोल ट्रेडर का और पार्टनरशिप दोनों का आएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन, एक ही बात है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, डेप्रिसिएशन के मेथड्स आ जाएंगे AS6 के अंडर, BRS आ जाएगी। उसके बाद पूरा का पूरा पार्टनरशिप डोज आएगा, एक अमेलगमेशंस आ जाएगा भाई। उसके बाद आएगा कंसाइनमेंट्स आ जाएंगे, जॉइंट वेंचर आ जाएंगे, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है PSSSB जूनियर ऑडिटर ऑडिट इंस्पेक्टर के लिए। तो चलिए, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, क्या होता है अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, क्या होता है? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, टू फाइंड मार्केट वैल्यू, टू सेव टैक्स, टू मेंटेन एक्सपेंसेस, डिटेल ओनली। बताइए भाई, हु कॉल्ड अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? किसने कहा था भाई? कोहलर ने कहा था, वारेन बफेट ने कहा था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने कहा था, या नन ऑफ दिस? किसने कहा था? आता नहीं ना क्वेश्चन, तो भाई किया करो, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली यूजफुल, किसके लिए यूजफुल है? और ऑनर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पे टैक्सेस, टू कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट, टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स ओनली, टू शो फाइनेंशियल पोजीशन। बताइए भाई, ये ऐसे डिप्लोमेटिक से क्वेश्चन आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज ओनली पास्ट रिकॉर्ड, ओनली फ्यूचर एस्टिमेट्स, बोथ पास्ट प्लस फ्यूचर, ओनली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। क्या करती है भाई? विच अकाउंटिंग कन्वेंशन स्टेट्स एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस? कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन या मैचिंग? ये इजी है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड ऑनर्स आर द सेम, बिजनेस एंड ऑनर्स आर सेपरेट, business is not an entity, owner is not responsible for assets. Who developed the double entry system? Luca Pacioli, कोहलर, पेटॉन या हिक्स? किसने बोला था? जर्नल इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है उसको? बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ये इजी है। कैश बुक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नल प्लस लेजर, जर्नल प्लस BS बैलेंस शीट, जर्नल लेजर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल प्रॉपर और ट्रायल बैलेंस। किसका होता है भाई? अगला देखते हैं। विच सब्सिडरी बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज? किस में आते हैं? सेल्स बुक में, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, या JP में? अगला देखते हैं। लेजर इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है इसको? प्रिंसिपल बुक, सेकेंडरी बुक, बैलेंस्ड बुक, या फिर नन? The main objective of preparing a trial balance is to detect errors, to prepare final accounts, to check mathematical accuracy, all of these. The main purpose of a trading account is to find net profit, to find GP, to verify trial balance, to prepare balance sheet. Which of the following is an example of capital expenditure? Purchase of building, salaries paid, stationery, telephone bill. Depreciation means increase in value, decrease in value due to wear and tear, obsolete, obsolescence, gain, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। एक बात दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो 14 को जर्नल एग्ज़ाम है ना, उसके भी सारे नोट्स वीडियोस आपको इसी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। जीके अब तक बिल्कुल भी कवर नहीं हुई है। 10 दिन के अंदर अंदर आपके जीके के सारे टॉपिक, चाहे 100 वीडियो क्यों ना बनानी पड़ जाए, सारे आपको कवर होके मिल जाएंगे। हमारी इंग्लिश पेंडिंग है, इंग्लिश के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, उसका भी आपको सब कुछ मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। दिन रात एक करके मेहनत करेंगे भाई,
बट एक बात मैं भी चाहता हूँ कि भाई जितना लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो चैनल को करते रहना, क्योंकि यार जब चैनल बड़ा होता है तो मोटिवेशन मिलता है, तभी इतनी मेहनत होती है। अगर पता लगा कोई चैनल बढ़ नहीं रहा फिर चैनल पे मज़ा नहीं आता और इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते, है ना। तो हम भी चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएँ, तो जितने लोगों को शेयर कर सकते हो करो, ताकि मैं इन द एंड आपके लिए, जब तक आपकी जॉब ना लग जाए भाई, आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूँ ऐसी मटेरियल। In straight line method, depreciation is equal every year, decreasing every year, increasing every year, random. Easy है. Diminishing balance method is also called straight line method, reducing balancing method, revaluation method, unit of production method. The main purpose of BRS is to match cash book and passbook, to correct trial balance, to calculate depreciation, to create reserves. BRS is prepared by only bank, only business, business by comparing passbook, auditor. Final accounts includes which statement? Trading account, P&L account, balance sheet, cash book and ledger, journal and trial balance, BRS and depreciation. Which of the following is revenue expenditure? कौन सा इसमें से revenue expenditure है? Purchase of machinery, painting of machinery, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग या परचेज ऑफ लैंड। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग? ये आसान है, सारे कर लेना, मैंने तो एक बताया आपको, आप सारे कर लेना, रट्टा मार लेना। विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग, रिवैल्यूएशन या एन्युटी मेथड? विच आइटम नॉर्मली कॉजेज डिफरेंस इन BRS में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनप्रेजेंटेड चेक, कैपिटल एक्सपेंडिचर या डेप्रिसिएशन? इजी है। अ बैंक ओवरड्राफ्ट विल अपीयर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L। ये आसान है। पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय विच एक्ट इन इंडिया? कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या नन? ये इजी है। इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल इज, ये भी इजी है, 6, 12, नॉट अलाउड 8। इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैपिटल इक्वली एज पर एज, एज पर इन्वेस्टमेंट टाइम। Goodwill is shown in which part of balance sheet? Asset side, liability side, trading account, not recorded. ये easy है। When a new partner is admitted, goodwill brought in cash is credited to revaluation account, old partner's capital account, new partner's capital account, reserve. When a partner retires, his share of goodwill is compensated by bank loan, old partners, remaining partners, company reserves. At the time of dissolution of partnership form, which account is prepared? Realization account, revaluation account, goodwill account या memorandum account? In case of dissolution, creditors are paid from partners capital only, realization account proceeds, reserve fund या फिर goodwill. A piecemeal distribution refers to sale of assets in one lot, gradual realization and distribution of cash, settlement of liability only, amalgamation process. Consignment means sale of goods on credit, goods sent to agent for sale, goods purchased for resale, goods returned by customer. In consignment, risk of goods remains with consignee, consignor, both या bank. Commission given to consignee to bear risk of bad debts is called del credere commission, ordinary commission, overriding commission, turnover commission. Which account is prepared in the books of consignor to find out profit or loss? Trading account, consignment, joint venture या reserve? ये easy है। Joint venture is similar to partnership, company, sole proprietor या cooperative society. Joint venture is normally formed for a long period, a single project or transaction, manufacturing business, sale, service business. Which account records transactions of joint venture when co-venture keeps separate books?
memorandum joint venture, consignment account, P&L account, reserve account. In joint venture, if one co-venture records all transactions, which account is opened? Joint venture, realization, trading, P&L account. Which method is most commonly used for joint venture accounting? Separate set of accounts, memorandum joint venture account, consignment account, reserve fund. Profit on joint venture is shared among co-ventures in equal ratio only, capital ratio, agreed ratio, loan ratio. In absence of an agreement, profit on joint venture is shared according to capital equally, according to investment period, not distributed. Difference between consignment and joint venture is, in consignment सारे पढ़ लो यार, बड़ा थोड़ा ठीक, खुद पढ़ लो एक बार. Joint venture is dissolved after every 5 years after completion of specific project when government orders never. Which document is prepared in joint venture for settlement of accounts between co-ventures? Memorandum account, joint venture account, settlement statement, trading account. If one co-venture records his own transactions only, which account is prepared to find out profits? Joint venture account, memorandum joint venture account, P&L या realization? बड़ा करना पड़ेगा, छोटा है ये वाला, ये अकेले छोटा है ना इसका फॉन्ट. Which accounting principle matches revenue with related expenses? Consistency, matching, realization या prudence? अगला देखते हैं. Which concept assumes business will continue for long term? Realization, going concern, accrual या conservatism? If a transaction affects both cash and bank, it is recorded in general proper, double column cash book, purchase, sale book. Outstanding expenses are shown as asset, liability, income या reserve? Easy है. Prepaid expenses are shown as asset, liability, capital या reserve? Which error is not disclosed by trial balance? Wrong totaling, posting on wrong side, complete omission of transaction, wrong balancing? Easy है. Transfer of net profit to capital account is recorded in JP, ledger, profit and loss appropriation account या cash book? Easy है. Depreciation is charged to comply with which principle? Cost, matching, conservatism, due respect? Which method of depreciation is accepted by Income Tax Act in India? Straight line method, written down value method, annuity method या revaluation method? Which statement is prepared to reconcile cash book and passbook balances? Trial balance, BRS, realization account या memorandum account? In case of dishonor of a check, which account is debited? Bank account, debtor account, creditor account, cash account? In partnership, salary to partners is allowed only if firm has profit, partnership deed allows, government approves, auditor recommends? Easy है. If partnership deed is silent, interest on drawings is allowed at 6%, at 12, not allowed 10%. ये मुझे एक तो शायद repeat हुआ question. On admission of a new partner, which account is prepared for revaluation of assets and liabilities? Realization, revaluation, goodwill, memorandum. On death of a partner, his share of profit up to the date of death is transferred to revaluation account, deceased partner's capital account, reserve fund या goodwill? Profit on dissolution of a firm is transferred to partner's current account, partner's capital account, reserve account, goodwill account? In dissolution, if partner's capital account shows debit balance, he is paid, liable to bring cash, exempted, adjusted against reserves. When one firm takes over another firm, it is called absorption, dissolution, reconstruction, liquidation. In amalgamation of firms, which account is opened? Realization account, reserve account, profit and loss account, trading account? Gradual settlement of creditors during dissolution is called piecemeal distribution, amalgamation, absorption या consignment? Goods sent on consignment are recorded at selling price, cost price, higher of cost or market price, net realizable value?
Unsold goods lying with consignee are called closing stock on consignment, VIP, work in progress, return outwards, reserves. Normal loss in consignment is treated as charge to P&L account, ignored and distributed over remaining goods, asset liability. Abnormal loss in consignment is transferred to consignee account, profit and loss account, reserve account, goodwill. Consignee is owner of goods, agent of consignor, customer, buyer. Del Cadre Commission is allowed to cover risk of fire loss, bad debt, normal loss, stock loss. In joint venture, if each venture records only his transactions, profit is ascertained from revaluation account, memorandum joint venture account, reserve account, goodwill account. Joint venture is a permanent partnership, temporary partnership, cooperative या company. When separate books are maintained for joint venture, which account is not required? Joint bank account, joint venture account, memorandum joint venture account, co-ventures account. Joint venture differs from partnership because JV has separate act, is temporary, must have more than 10 members, required registration, which is not a feature of joint venture. Temporary in nature, specific purpose, unlimited liability, continuity forever. In joint venture, if one venturer incurs expenses, it is debited to his capital account, joint venture account, reserve, trading. Easier. Memorandum joint venture account is prepared to find net P&L, profit or loss, asset, liabilities, reserves. Joint venture is dissolved after 1 year, 5 years, completion of venture project, mutual agreement. Which account shows expenses borne by co-venturer in joint venture? Joint venture account, P&L account, realization account, settlement account. In joint venture, profits are transferred to P&L account, co-ventures account, reserve fund, trading account. If joint venture account is maintained, sale proceeds are credited to joint bank account, joint venture account, co-venture account, reserve account. Which method is used when no separate set of books is maintained for JV? Memorandum JV account, realization account, joint bank account, goodwill account. Joint venture transactions resemble which type of accounting? Consignment, partnership, company account, government accounting. Profit from joint venture is divided among co-ventures according to equal share, capital invested, agreement, turnover, which is prepared by each co-venture when they maintained on books. Memorandum joint venture account, realization account, consignment, reserves. Which principle ensures all expenses and incomes are recorded in the year they relate? Cash principle, accrual principle, realization principle, conservatism. ये easy है. Goodwill is an example of fictitious asset, intangible asset, tangible asset, liability. Which expenditure provides benefit beyond 1 year? Revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, miscellaneous. Carriage inward is shown in trading account. ये easy है भाई, कर लो खुद. Carriage outward is shown in trading account, P&L account, balance sheet, asset or liability side. Closing stock appears in, खुद देख लो ऑप्शन भाई. Depreciation is charged on fixed asset, current asset, intangible asset, liability. Which is not a method of providing depreciation. Sale, ये तो easy है भाई, खुद पढ़ लो एक बार. The accounting equation is, ये भी देख लो, बताओ मुझे फिर क्या इसका आंसर है. 10 बजे अब आपको इसके आंसर पड़ जाएंगे. धन्यवाद.